Then 23. How many of your answers have been given? Let me check it out. आया सभी को? चलिए, what is the formula you will be using बेटा? जनरल फॉर्मूला याद है आप लोगों को? x minus lower fixed point divided by upper fixed point minus lower fixed point is equals to constant. तो यहाँ पर देखो, in mercury thermometer the ice point is marked as 20 degrees Celsius. The steam point are marked as 80 degrees Celsius. At 60 degrees temperature, the reading of the above thermometer will be equal to how much? And this is your x minus lower fixed point is 20 divided by upper fixed point is your 80 minus your 20 is equals to, ये बन जाएगा कितना बेटा? 60 डिग्री सेल्सियस के पास, यानी 60 minus lower fixed point is 0 for the Celsius scale divided by, this is your upper fixed point for the Celsius is 100 minus lower fixed point is 0 degree Celsius. यानी x minus 20 divided by 80 minus of your 20 कितना आएगा बेटा? 60 is equals to 60 divided by 100. Then ये वाला यहाँ पर चले गया, ये वाला और ये वाला भी यहाँ पर चले गया. So it is x minus of 20 is equals to 6 is 36. X is equals to 36 plus 20. That will be equal to 56. Fourth option will be the answer. आया सभी को? Check. Very good. Question number 24. The sun emits the maximum intensity corresponding to 4,800 angstroms wavelength, and its surface temperature is around 6,000 Kelvin. The temperature of a star which emits the maximum intensity corresponding to 4,000 degrees Celsius will be equal to how much? Take 1 minute of your time and try to do it better. Good question. फॉर्मूला याद आना आप लोगों को, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? द सन एमिट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू 4800 एंगस्ट्रॉम्स, यानी वेवलेंथ दे रखा है. वेवलेंथ इज गिवन एज ऑफ योर 4800 एंगस्ट्रॉम्स. द वेवलेंथ एंड इट्स सरफेस टेम्परेचर इज अराउंड, यानी टेम्परेचर इज गिवन अराउंड योर 6000 केल्विन. द टेम्परेचर ऑफ द स्टार व्हिच एमिट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू, यानी लैम्डा 1 दे रखा है, लैम्डा 2 इज गिवन एज ऑफ योर 4000 एंगस्ट्रॉम्स. Maximum intensity, the temperature of the star which emits the maximum intensity corresponding to 4000, and a maximum intensity matlab that will be equal to how much for me again? Temperature. The temperature of the star. So yani T2 is equals to how much? T1 दे रखा है. Which formula लगाओगे बेटा? कौन सा formula लगाओगे? Chat box में देना आंसर. I'm not doing it. Formula आप लोगों को बोलना है. वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन में अपने को हीट ट्रांसफर में एक फॉर्मूला है. हिंट दो. अरे 20 बच्चे, आप लोग सभी लोग चार्ट बॉक्स में टाइप करना बेटा. लैम्डा इज इनवर्सली रिलेटेड टू द टेम्परेचर. I given you the option of unmuting yourself better. Wings displacement law, very good. Very good. Dania, Samina, very good. और कोई? Lambda is equals to some B into your T. Very good. Very good. चलिए. 7200 also given answers. Very good. Very good. Chalo. Very good. Isa, very good. Madhya, Firdos, very good. Chalo. Wings displacement. Wings displacement formula क्या बेटा? Lambda into T is equals to some constant. Isn't it? तो यानी lambda 1 T1 will be equal to lambda 2 into T2. T2 निकालना है अपने को यहाँ से. So T2 will be equal to lambda 1 T1 divided by lambda 2. Lambda 1 is 4800, T1 is your 6000 divided by lambda 2 is your 4000. Isn't it? So that will give me answer कितना है? 7200 Kelvin. Very good. चलिए. Question number 27 अपन ने टिक कर लिया था करने के लिए. चलिए. Question number 27 टिक करिए.
light with the energy flux. Flux मतलब देखो, this is a unit क्या है? What is the unit of power? Power divided by area. Nothing but intensity is equals to what beta? Power. Energy flux is equals to your 15 watt per centimeter square falls on a perfectly reflecting surface at a normal incidence. यानी जितने इंसिडेंस पे गिरेगा उतने इंसिडेंस पे रिफ्लेक्ट होगा. If the surface has an area of 30 centimeters square, the average force exerted on the surface during 30 minutes of the time duration will be equal to your how much? Energy falling is given for me in the problem beta, that is given how much for me? 15 watt per meter square, isn't it? चलो, मोमेंटम ट्रांसफर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला याद है आप लोग को? मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2u डिवाइडेड बाय c, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए. सो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू योर चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय योर टाइम, isn't it? So change in momentum मतलब 2 into u divided by c, isn't it? Energy will be equal to how much? Energy falling on that one will be equal to how much working? कितने टाइम के लिए इधर रखा है? Energy flux is given for me, light of intensity of energy flux. So energy will be equal to your total energy whichever has been falling on that one. U is equals to energy flux, that is nothing but 15 watt per centimeter square multiplied by its area. कितने area पे गिर रहा है? That is nothing but of your 30 centimeter square. And for how much time beta? Time is given as 30 minutes, यानी 30 into 60 करना. ये important है, ये conversion अपने को important. यहाँ से EU की वैल्यू निकल जाएगी. EU की वैल्यू लगा के इसमें डाल दीजिए, divided by C. C is your 3 into 10 to the power of 8 meter per second speed of light. तो उसमें से momentum निकल जाएगा. That momentum is equals to your, हम लोग whatever you are getting, F is equals to delta P by time. Again time will be equal to how much for me beta? 30 minutes है. So it is your 30 into 60 कर लेना to convert it. So that will give me the answer for the force. I am leaving the calculation for you. So please try to do it out one. Energy निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको. Energy is equals to your power into area into time, isn't it? Intensity is equals to your, intensity is nothing but equal to your what? Energy flowing per unit area per unit time. Intensity मतलब power by area, that is equals to E divided by A into your T. A P by A is given for me in the problem how much beta? 15. So this is given as 15, that is energy divided by A into T. So energy is represented by E or U लिख सकता हूँ ना बेटा? तो energy का फॉर्मूला क्या हो गया? Energy is equals to 15 into area into time. Area दे रखा है प्रॉब्लम में, टाइम दे रखा है 30 मिनट, 30 into 60 कर लो, that will giving me the energy. एनर्जी आ गया तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? 2u डिवाइडेड बाय c, क्योंकि कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई भी एक लाइट इस नॉर्मली ऐसे गिर रही है तो जितने एंगल पे गिरेगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, isn't it? So momentum is equals to u by c, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो 2u by c. तो फोर्स का फॉर्मूला F is equals to momentum divided by time. इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, that will give me the answer. Then थोड़ा कैलकुलेटिव है, you can do the calculation later. Come to the question number 28. In isobaric process, आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने के साथ ही पता चल जाएगा, दिस इज लिटिल बिट ऑफ इट ट्रिकी. इसको हम लोग होल्ड में रख सकते हैं बेसिकली, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको कर दिया, वरना आप लोग इसको होल्ड में रखे, यू कैन डायरेक्टली शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In an isobaric process, change in internal energy is given by symbol have their usual meaning. N into Cp into delta T, N into Cv into delta T, 0 P into delta V. क्या होगा बेटा? Isobaric process में heat is supplied is given in the form of internal energy का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? कभी भी internal energy is always equals to your N into Cv into delta T, whatever may be the process. So it is your N into Cv into delta T, internal energy. Fourth one, constant pressure, internal energy will be equal to your how much? dq will be equal to your du plus of your dw. Done. Check. Question number 29 we'll do later, 30 also will done later. So हम लोग ने छोटी किया था, that is the question number 31, which is associated with your capillary tube. I hope you can do this question better. A capillary tube of radius r is immersed in a water. चलो, this is your capillary tube और इसमें water भरा हुआ है यहाँ पर और इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब इमर्ज्ड हुई इस तरह से, ओके, जिसका रेडियस है मेरे पास r एंड वाटर राइजेस अप टू, इन दिस वन इज अप टू हाइट ऑफ योर h. चलो, इसमें वाटर इज योर h और इसका रेडियस है r.
The mass of the water in the capillary tube is 10 grams. चलो इसका mass भी दे रखा है मेरे को. Mass is equals to your 10 grams. Another capillary tube of radius 3r by 2. Okay, चलिए. Another capillary tube है इसके अंदर. यहीं पर ही another capillary tube है. जिसका रेडियस दे रखा है, इसमें भी वाटर रेस करेगा. जिसका रेडियस दे रखा है 3r by 2 immersed in the water. The mass of the water that will raise another capillary tube जिसका रेडियस दे रखा है capillary tube of radius r is immersed in water and water rises to height h. है दोनों में भी height h ही है बेसिकली. another capillary tube का रेडियस कितना है 3r by 2. ओके 3r by 2 है और इसमें मास कितना है बेटा? मास ऑफ द वाटर टू भी निकालना अपने को m2 निकालना है बेसिकली. डन. h1 is your h. h2 मुझे नहीं पता ना बेटा, h2 भी नहीं पता मुझे. So this is your h2. So h2 भी नहीं दिया आपने इसमें जितना वाटर इंक्रीज हुआ. So I can use the equation of what you call that one, Zero's law, isn't it? Can I use the Zero's law बेटा? Surface tension का फॉर्मूला क्या आता है? h is equals to your 2t cos theta divided by r rho into g, isn't it? r into h is equals to constant बन जाएगा बाकी का, यानी r1 h1 will be equal to r2 h2, isn't it? r2 की वैल्यू निकालना है. Mute yourself बेटा. r2 is equals to r1 into h1 divided by h2. अब सॉरी हम लोग h2 निकालना है ना. So h2 is equals to r1 h1 divided by r2. r1 की वैल्यू कितनी दे रखा है r, h1 की वैल्यू दे रखा है h, r2 की वैल्यू दे रखा है 3r divided by your 2. यानी r gets cancelled, so this will be equal to your 2h divided by 3. So this is the value of your h2. And mass निकालना है अपने को. You know that mass of the water which has been taken, mass will be equal to how much? Mass of the water which has been raised is mass is equals to volume into your density is equals to mass by volume. So mass is equals to your volume into your density. Volume is equals to your area into your height to which it has been raised into rho. Area will be equal to pi r square into h into rho. Done. चलिए. What is the relation I can write here from this one? Same liquid है तो pi same रहेगा and the density will also be the same. So mass is directly proportional to your is equals to your ये कितना हो जाएगा r square into h पे डिपेंड करेगा. Done. चलिए ये m1 हो गया. m2 is equals to your r1 h1. This one is r2 square into h2. r2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3r divided by 2 का whole square multiplied by h2. h2 is 2h divided by 3. And this will be equal to 3 3s are 9 into r square divided by 4 into 2 into h divided by 3. 2 1s are 2 2s are 3 1s are 3 3s are. So this will be equal to how much for me? 3r square into h divided by 2. Done. Initially mass कितना दे रखा है बेटा? r1 square into h मतलब r square into h. That is given as of your 10g. मतलब इसमें से I can write here 3 by 2 into r square में से एक r ले लो और एक h ले लो into r as it is रह जाएगा. So that will be equal to r into your h. r square into h. Sir, r square into h पूरा दे रखा है ना, क्यों डायरेक्टली ले लो. r square into h is nothing but 10 into g. 2 1s are 2 5s are 3 5s are 15. So this will be 15g. So 15g will be the answer. Good question. Very good. Sir, how r square into h is 10? यहाँ पर दे रखा है ना बेटा, r square into h is given as 10g in the problem. The mass of the water in the capillary tube is initial mass. First tube के अंदर mass दे रखा है ना. Okay, sir. Isn't it? तो इसलिए मैंने r square into h की वैल्यू डायरेक्टली 10g डाल दिया. So substitute get the value of 15g. Good question बेटा. The frequency of the photon having the linear momentum 3.3 into 10 to the power of minus 26 kg per meter per second in vacuum will be equal to your how much? Can anyone do this question बेटा? Frequency of the photon, यानी energy of the photon का formula क्या है? E is equals to h into nu. I'm doing here right now. Question number 32. Frequency निकालना है हमने को. Frequency is equals to your energy divided by your Planck's constant. Can I write the energy in terms of your momentum बेटा?
can write the momentum. Energy E is equals to your m into c square. That means m into c into c. M into c is nothing but momentum into c is your E. And energy is equals to PC लिख सकता हूँ. Energy is equals to PC divided by H. So momentum is given how much in the problem for me, beta? 3.3. 3.3 into 10 to the power of minus 29. Speed of light is 3 into 10 to the power of 8 divided by Planck's constant की वैल्यू तो सभी को पता है 6.6 into 10 to the power of minus 34. So to simplify कर लीजिए and let me know what will be the answer for that one. Question number 32 is also a good question. आ गया 3.3 into 10 to the power of minus 29 multiplied with speed of light 3 into 10 to the power of 8 multiplied divided by Planck's constant. कितना आ रहा? Question option 1. Okay. 1.5 into 10 to the power of 13 hertz. आ गया सभी को? चलो, very good. Question number 15 or sorry, question number 34, 35, 33, 34, 35. Take 2 minutes of your time and give me the answer fastly. 35 तो आपको देखने के साथ ही बोल सकते हो basically. Which of the following is correct match? 1 Fermi मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 power minus 10. 10 power minus 10 angstrom. 1 फर्मी कितना होता है? 1 Fermi is equals to 10 to the power of minus 15 meters. 1 angstrom is equals to 10 to the power of minus 10 meters. Centimeters में मतलब 10 to the power of minus 8 centimeters. Light year parasecond याद भी नहीं रहा तो we can write it out. Then एक 1 light year कितना होता है बेटा? 1 light year is equals to 9.46 into 10 to the power of your 15 meters. ये उल्टा दे दिया. Light year इसके लिए आना चाहिए and 1 parasecond will be equal to this much. याद रख लो फिर भी. Approximately parasecond ये नहीं होगा. 1 parasecond will be equal to 3.08 into your 10 to the power of your 16 meters. Power wrong दे दिया. So ये नहीं होना चाहिए. 1 light year की वैल्यू दे रखा है. 1 light year is 9.46 into 10 to the power of 15 meters. याद नहीं है तो याद रख लीजिए. 1 angstrom is 10 to the power of minus 10 meters or 10 to the power of minus 8. 1 Fermi मतलब आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हो 1 Fermi is 10 to the power of minus 15 meters not centimeters. So 2 is matching with your this one. So second option is correct. 33, 34. 33, 34. 33 is elasticity का concept है. आप thermodynamics में भी पढ़े होंगे. 33, 34 का option 4 दे रहे हैं कोई. चलो let us try to check it out. 33, 34 का आंसर बोलना सभी लोग. Bulk modulus of elasticity for an ideal gas in adiabatic process. In adiabatic process, bulk modulus is equals to gamma times of pressure. Adiabatic के लिए. Bulk modulus for isothermal will be equal to pressure P. याद आया? तो isothermal is proportional to adiabatic. Bulk modulus of an elasticity of an ideal gas is for an adiabatic process proportional to pressure is 0, exists only at an absolute temperature is infinity, is proportional to your pressure P. Done? Chali. Two resistance R1 is equals to 20 plus or minus 1 ohms, R2 is equals to 10 plus or minus 1 ohms are connected in series. So series combination में अपने को formula मालूम है R in series is equals to R1 plus of your R2. That means this will be 20 plus or minus 1 plus this one is 10 plus or minus of 1. मतलब this will be equal to 30 plus or minus of your 2.
हो गई बात, वेरी सिंपल, फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड। निदा, अफरीन, दाना, दानियास ने भी आंसर दे रखा है, and lot other also has given the answers for this one. 34 के लिए मदिया फिरदौस also has given the answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 ट्राई करिए। The dimension of the physical quantities are given by m power x, l power y, t power z. ये क्या है बेटा? m power x है, l power y है और t power z है। Then physical quantities will be, terminal velocity होगा या force होगा, energy density होगा या surface tension होगा। सबके डायमेंशंस लिखो आप। रॉन्ग करने का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। Madhya Firdaus is telling fourth option. Nida Afreen is also telling fourth option. और कोई? Mariam Sultana fourth. (33) 1. Samina 4. Sadaf Patun 4. Very good. और कोई? आ गया 4. सरफेस टेंशन मतलब क्या है बेटा? चलो टर्मिनल वेलोसिटी बोलिए, पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला LT पावर -1 आना चाहिए। तो x के लिए तो 0 है, L के लिए तो y है ना, y की वैल्यू तो 1 ही है, लेकिन z की वैल्यू -1 आना चाहिए, तो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होगा। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू योर ये ना, सो इट इज योर m इंटू LT पावर -2 आना चाहिए। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू -2 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ml² t पावर -2 डिवाइडेड बाय l², ये चले जाएगा, तो दिस वन इज m l पावर -1 t पावर -2, यहाँ पर -1 आना चाहिए, तो ये भी नहीं दिख रहा। सरफेस टेंशन मतलब T इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, फोर्स का डायमेंशन है ml t पावर -2 डिवाइडेड बाय लेंथ, ll गेट्स कैंसिल, सो इट इज m into l0 t पावर -2, यानी x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 0 और z की वैल्यू हो गई -2। फोर्थ ऑप्शन इज आ गया। चलिए वेरी गुड, तो 80 तो आराम से निकल रहे हैं ना मार्क्स अपनी। The column 1 contains the symbol of some of the PN junction diodes and column 2 contains their names. Match the column 1 and column 2 with this one. Okay, fine. ये तो सिंबल बहुत फेमस है, आप लोग को मालूम ही है। D कौन सा रिप्रेजेंट करेगा बेटा? Xenon diode. Xenon diode। तो D के लिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? D के लिए should be equal to your P। तो D के लिए P कहाँ दिख रहा है? देखो सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो। Whereas the first option is right now for me। ये तो बहुत फेमस है, आप लोग कर ही रहे हो, PN जंक्शन, isn't it? ये तो नॉर्मल PN जंक्शन डायोड है, isn't it? So ये will be equal to S, ये will be equal to S, ये will be S मतलब सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है। Okay, we need to check even with the third one। थर्ड वन देखो बेटा, यहाँ पर इंसिडेंट है और यहाँ पर लेबरेट है। When it is been incidenting, it is known as what? Photodiode। This one is known as photodiode, यानी B will be equal to R। When it is giving away light emitting, ये जब दे रहा है ना light emitting होता है, एरो मार्क्स ऊपर जा रहे हैं मतलब लाइट एमिटिंग होता है, तो C will be equal to Q, C will be equal to Q, यानी सेकंड ऑप्शन। डन, आ गया, वेरी गुड। चलिए 40 41 ये तो नहीं टिक किया अपन ने। 44 चलो क्वेश्चन नंबर 44 ट्राई करिए बेटा सभी लोग। A vessel contains 2 grams of oxygen at 47 degrees Celsius and 10 grams of atmospheric pressure. After some time, due to a leakage, the pressure drops to 25/4 atmosphere and the temperature becomes 27 degrees Celsius. Mass of the oxygen that leaked out will be equal to your how much? I hope you can do this question. नहीं हो रहा तो you can come back and try to do it later.
लेंथी दिख रहा है तो यू कैन जस्ट कीप द होल्ड, जस्ट गिव इट ट्राई, अगर आप लोग को साथ हो सकता है तो। लीकेज का प्रॉब्लम है, isn't it? आप लोग को 1 से 2 मॉडल करवाया हो चुका हूं मैं बेसिकली, लेकिन आप लोग को एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है। नंबर ऑफ द मोल्स दैट विल बी लीक्ड विल बी इनिशियल माइनस रिलीज के बारे में करना है बेसिकली। जितने जो होंगे डेल्टा एन विल बी इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स माइनस जो रिलीज कर चुके हैं, दैट इज फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना बेटा, एन की वैल्यू इसमें से लगा सकता हूं मैं, दिस इज योर P1 into V divided by R into your T1 minus this one is P2 into volume is V divided by R into temperature is T2, isn't it? तो इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटा, V by R मैं बाहर निकाल सकता हूँ, so this one is P1 by T1 minus of your P2 by your T2, that so उसने पूछा क्या हुआ है, due to this one the pressure drops to this much, pressure drops and temperature is given, the mass of oxygen that is leaked, mass of the oxygen that is leaked मतलब mass will be equal to number of moles into your molecular weight, तो number of moles निकालना है इसमें से, यानी डेल्टा एन, ये वैल्यू निकालना है, this is your डेल्टा एन, so mass will be equal to डेल्टा एन into molecular weight, ये करने का तरीका। molecular weight of oxygen कितना होता है बेटा 32, ऑक्सीजन के लिए मोलिकुलर वेट होता है 32, डेल्टा एन निकालना है, डेल्टा एन निकालना है, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ रही देखिए बेटा, vessel contains 2 grams of oxygen at your 47 degrees Celsius, V by R की भी वैल्यू नहीं दिया ना बेटा, vessel contains 2 grams of oxygen at 47 degrees Celsius and N is equals to mass by molecular weight, mass is 2 and this one is your 32, यानी this will be equal to 1/16, यानी N1 दे रखा है, तो इसमें से मैं इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूँ, क्या देखो डेल्टा N will be equal to, I am rearranging this one, so I can write this one as of your P1 into V divided by R into T1 मैं कॉमन ले लो, so this will be 1 minus this will be equal to T1 into your P2 divided by P1 into your T2, मल्टीप्लाई करो यही वैल्यू आएगी फिर वापस, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू N1 into this is 1 minus T1 into your P2 divided by P1 into your T2, तो N1 की वैल्यू दे रखा है प्रॉब्लम में, N1 की वैल्यू कितना है मुझे 1/16, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है बेटा, लेंथी है लेकिन टफनेस के अंदर आ जाएगा, 1 minus T1 की वैल्यू कितनी दे रखा है 320, P2 की वैल्यू इज राइट नाउ फॉर मी 25 divided by 4, so this is 25 divided by 4 और इसका प्रेशर दे रखा है मेरे पास कितना 47 डिग्री सेल्सियस, another is 10 atmospheric pressure यानी 10 into 10 to the power of 5, 1 atmospheric pressure मतलब 10 into 10 to the power of 5, 10 atmospheric pressure and 27 degrees Celsius, another one is 47, यानी this will be equal to T1 P2 आ गया, T2 will be equal to your कितना बेटा 47 plus 273, and this one is of your 273, that is 300, T2 की वैल्यू हो जाएगी 300 into P1, P1 is nothing but equal to 10 atmosphere, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, विल गेट द वैल्यू ऑफ योर डेल्टा एन व्हाटएवर इट मे बी, आई एम लीविंग द कैलकुलेशन फॉर यू, वो वैल्यू लेकर के यहाँ पर डाल दीजिए, मल्टीप्लाई विद 32, दैट विल गिव मी द मास ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है बट स्टिल यू कैन ट्राई टू डू दैट वन, थोड़ा प्रैक्टिस करो, गुड मॉडल है, 2 दिन बाद लिख के ट्राई करो, वी कैन डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 46, a planet is revolving around the sun in a circular orbit with radius r, if the force between the planet and sun is proportional to r to the power of -3/2, then square of the time period would be proportional to your how much work, can anyone give me the answer for this one? Force का रिलेशन दे रखा है मुझे, F is equals to, as it is moving in a circular path, F is equals to capital G capital M small m divided by, this is your r to the power of 3/2, and circular path में मूव कर रहा है तो mv square divided by r लिख सकता हूँ, isn't it? So this is the velocity force. Then
तो इसमें से v की वैल्यू निकाल लीजिए, ये स्क्वायर निकाल रहा हूँ v, तो v की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ये स्मॉल m गेट्स कैंसिल राइट नाउ फॉर मी, सो दिस वन इज योर r, यहाँ पर r चले जाएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r पावर 1/2 टू द पावर ऑफ 1/2 रूट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है फॉर द रिवॉल्विंग, t is equals to 2 pi by omega, omega is equals to in terms of radius लिखना है, so that will be equal to 2 pi into r divided by v, isn't it? So that is equals to 2 pi into r divided by v, v की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड by r पावर 1/2 टू द पावर ऑफ 1/2, डन। आ गया, इसको मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो t is equals to this is 2 pi into r divided by this is your under root of gm, and this will be here r to the power of 1/2 है, मतलब रूट मतलब 1/4, मतलब t is directly proportional to r to the power of 5/4 because it is 1 plus 1/4 5. Good question बेटा this also. So 5/4 मतलब कहाँ पर आ रहा है, t is directly proportional to your 5/4, उसने पूछा क्या है t square, then square of the time period पूछा है ना, इसको स्क्वायर कर दीजिए, so t square is proportional to your r to the power of 5/2, so the fourth option will be the answer. Again good question man, थोड़ा tricky है but still you can do it out. Question number 47. Given below are the two statements, one is labeled as assertion, another is labeled as reason. Assertion, Carnot engine is most efficient among all the heat engines working between the same source and sink. Reason, whole heat cannot be converted into your work. See, Carnot engine is most efficient heat energy among all the types of collisions. That is no doubt, it is a correct. And whole heat cannot be converted into work. Cannot be converted into work. So assertion or reason options. A is not correct, B is correct, A and R are correct, A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. A is correct, but R is not correct. अब बताइए दोनों में क्या, दोनों भी correct है कि नहीं? A is not correct बोल रहा है, that is not possible. A and R are correct and R is the correct explanation of your A. ये वाला कोई Carnot engines में ये this is the what you call that one second law, इससे कोई relation ही नहीं है. Isn't it? A and B assertion reason both of them are correct, but reason is not the explanation for the assertion, so it should be third option. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of your A. Sure. 49, 50. Question number 50 try करिए एक बार. Direct question है. Two spherical soap bubbles of radius A and B are vacuum combined under the isothermal conditions. The resulting bubble will be equal to your how much? Resulting bubble का formula R is equals to under root of your R1 square plus of your R2 square. यानी यहाँ पर radius A and B दे रखा है तो A square plus of your B square. Directly formula based question है बेसिक. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो एक बार सेपरेट डिस्टिंक्शन निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें से आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा. फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर. चलिए, यानी आपने 84 मार्क्स तो पूरे कंफर्म थे. तो 1 घंटा अपने को लगा, थोड़ा मुझे लिखना पड़ा, एक्सप्लेनेशन करना पड़ा, उसलिए मुझे 1 घंटा पड़ा, लेकिन मेरे को और एक 20 मिनट 25 मिनट का तो टाइम मिलता अनदर 10-20 क्वेश्चंस करने के लिए. शायद मैं ये क्वेश्चन कर सकता. क्वेश्चन नंबर 29. The interference pattern is obtained with the two coherent light sources of intensity ratio n. In the interference pattern, the ratio of I max minus I minima divided by I max plus I minima will be equal to how much? बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्लास में भी आप लोग 1 से 2 बार कर चुके हैं बेसिकली इसको, और प्रीवियस में भी आ चुका है डायरेक्टली. एक बार ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लीजिए. तो 30 भी ट्राई कर सकते थे. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज to a straight conductor carrying current will be along the length of the conductor, radially outward, circular in the plane perpendicular to the conductor, helical particulation. देखो, the direction of the magnetic field lines close to the straight conductor carrying current. ये देखो ये straight conductor carrying current है, तो इसमें magnetic fields of lines will be बनेंगे इस तरह से basically. So it will be circular in the plane perpendicular to the conductor. That will be the best option for this. और कौन सा कुछ कर सकता था मैं? या क्वेश्चन नंबर 25 देखो, थियरी क्वेश्चन है, क्या आप सॉल्व कर सकते थे? देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 25. इनसाइड एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, isn't it? Inside an isolated मतलब for this one charge will reside only on the outer surface bit.
कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए थ्रू आउट द बॉडी, कंडक्टिंग है मतलब चार्ज इज रिसाइडिंग ओनली ऑन दिस वन. The electric field is always positive, always negative, either positive or negative, always zero. Can anyone tell me the answer for this one? Question number 25. Question number 25. Charge is residing only on the surface. Inside में कोई भी charge नहीं रहेगा. अगर charge नहीं है तो F is equals to E into Q. कोई force नहीं लगेगा, charge भी नहीं है, तो electric field भी नहीं रहेगा. तो electric field inside is becoming for me zero. It is always zero. Isn't it? Electric field inside is spherical, charge conducting shell is always equals to how much for me? Zero. शायद मैं क्वेश्चन नंबर 36 भी करता अगर रे ऑप्टिक्स आप लोग ने एटलीस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग याद रखे रहते तो यू शुड हैव बीन डन दिस टाइप ऑफ ए क्वेश्चंस. ए थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये वाला ऐसा ए थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू इज इक्वल्स टू 3/2 हैज अ फोकल लेंथ ऑफ योर 18 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड इन एयर. If this lens has been immersed in a liquid of refractive index 6/5, then the focal length will be equal to how much? See, 1 by focal length in the air will be equal to refractive index of glass with respect to air minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. If it is requested in some medium, that will be equal to refractive index of glass with respect to that medium minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. अगर इन दोनों का रेशियो लोगे बेसिकली तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा. सो 1 by focal length of air divided by 1 by focal length of the medium will be equal to refractive index of glass divided by refractive index of air minus 1 divided by this is the refractive index of glass with respect to air divided by refractive index of medium with respect to air minus 1. Isn't it? तो ये ऊपर चला जाएगा refractive index of medium divided by refractive index of air is equals to ग्लास के लिए कितना हो जाएगा बेटा? ग्लास के लिए दे रखा है 3/2, एयर के लिए हो जाएगा 1 minus 1 divided by refractive index of glass with respect to air मतलब this is also your 3/2 divided by refractive index of medium with respect to air, medium मतलब 6/5, this is 6/5 minus 1. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड फोकल लेंथ इन एयर दे रखा है मेरे को 18 यानी फोकल लेंथ इन द मीडियम डिवाइडेड बाय दिस वन इज योर 18 is equals to 3/2 minus 1 is nothing but equal to your 1.5 minus 1 यानी ये हो गया 0.5 divided by this one is right now 3/2 जो भी आ रहा है ये सिंप्लीफाई कर लीजिए we'll get the focal length of the medium. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. Then 17th one, a light ray deviates by 30 degrees when it gets refracted from the vacuum to the medium of an incident angle 90 degrees. Refractive index of the medium will be equal to how much? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये नॉर्मल है. A ray of light deviates by 30 degrees when it gets refracted from vacuum to a medium. यानी यहाँ से ऐसे गिर रही है और ये ऐसा रिफ्रैक्ट हो रही है, isn't it? और इसने क्या बोला? Right now it is getting deviated by, isn't it? When it is been reflected, a ray of light deviates by 30 degrees when it gets refracted from the vacuum, refracted from your vacuum at an angle of 90 degrees. Refractive index of the medium will be equal to your how much? Medium at an incident angle, यानी this angle of incidence is right now for me I की वैल्यू दे रखा है 90 degrees is asking the refractive index, यानी इसमें जो ray of light जो है ना ऐसा जाना चाहिए था लेकिन इसने deviation दे रखा है प्रॉब्लम में. अगर deviation दे रखा है तो ये 90 degrees होगा and deviation is your 30 degrees, so obviously refraction will be equal to how much for me? 60 degrees, क्योंकि total 90 degrees आना चाहिए ना. Angle of incidence must be equal to angle of reflection. So I can write here mu1 into your sine of your I must be equal to mu2 into sine of your R. Mu1 is 1 into sine I is nothing but 90 is equals to mu2 अपने को निकालना है. Sine of your R की वैल्यू हो गई 60 degrees. Isn't it? Sine 90 is 1, so that is equals to mu2 into sine 60 is √3/2. यानी mu2 value will be equal to 2/√3. Good question, बेटा. Third option. 2/√3. Very good. So that. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, क्या आप क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई कर सकते थे? A particle undergoes a section with a time period of 6 seconds. Shortest time taken by this particle in moving from mean position to the another position equal to half of the amplitude. And a direct question है, we are going from the mean position to x is equals to your a into sine of your omega into t. कहाँ जा रहे हैं? मीन पोजीशन टू अनदर पोजीशन which is equal to half of the amplitude, यानी x की वैल्यू हो गई a/2 that is equals to a into sine of your omega t. तो ये वाला चीज कैंसिल, so this will become for me your sine
पाई बाई 2 मतलब साइन पाई बाई 6 बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा इनटू टी, ये साइन और ये साइन विल गेट कैंसिल, सो पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी, यानी टी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, टी की वैल्यू हो गई मेरे पास पाई डिवाइडेड बाय 6 ओमेगा, isn't it? So ये हो गया 6 ओमेगा, चल राइट द रिलेशंस, यू विल गेट द आंसर फॉर दिस। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, that is equals to pi divided by 6, omega is equals to 2 pi by capital T, and ये pi will get cancelled, this is a t by 12, isn't it? T कितना दे रखा है प्रॉब्लम में, टाइम पीरियड इज गिवन है 6 seconds, it is 6 divided by 12, यानी 6 1 जा 6 2 जा, यानी 1/2 seconds will be the answer, third option done। अब फिर दोस्त फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है 1/2 आ रहा बेटा, सदफ खातून, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग को मालूम होना चाहिए था, पावर मैग्नेटिज्म में फॉर्मूला है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय 20 एम्पियर पर मीटर, देन वैल्यू ऑफ द फील्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच, यानी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू H, H is known as of your intensity of magnetization, then the value of the field, यानी B की वैल्यू पूछ रहा है, so म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4 pi into 10 to the power of -7 into 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, so that will be equal to your how much, 8 pi, 4 2 is 8, this will be equal to your 8 pi into 10 to the power of -6 Tesla, direct question but 4 mark, very good। Question number 11, consider the statements given below and select the correct options, action reaction both should be act on the same body, action reaction can be of different nature, अगर मैं आपको थप्पड़ मारूं तो क्या एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे हो रहा है कि डिफरेंट बॉडी पे पड़ रहा है, मेरा एक्शन है और रिएक्शन आपके ऊपर है, तो ऑब्वियसली 2 डिफरेंट बॉडीज पे पड़ेगा बेसिकली, छटा मार के देखो किसी को, isn't it? So what will be the answer for this one? ये तो इनकरेक्ट हो गया, एक्शन एंड रिएक्शन कैन बी ऑफ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट नेचर थोड़ी होगा, क्या होगा, सेम नेचर होना चाहिए ना, एक्शन एंड रिएक्शन शुड बी ऑफ सेम नेचर। मैं आपको थप्पड़ मार रहा हूं और आपको लग रहा है कि फूल बरस रहे हैं, नहीं होगा ना ऐसा, सेम नेचर का होना चाहिए, रिएक्शन कैसा होगा, गुस्सा वाला नेचर ही होगा ना, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, वेरी गुड, बोथ आर रॉन्ग, वेरी गुड वेरी गुड, ओके ये भी ट्राई कर सकते हैं, अभी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप लोग कर लीजिए बाकी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी ट्राई कर सकते हैं बेटा, मोमेंट फोर्स दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर मोमेंट, मोमेंट मतलब टार्क, टार्क इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, isn't it? So I can write क्रॉस प्रोडक्ट में I J K लेके कर लीजिए, that will be more better, isn't it? तो इसमें अपने पास फोर्स भी है, सब कुछ दे रखा है, बेसिकली सिंप्लीफाई कर लीजिए, आई होप यू कैन डू दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन। R1 और R2 दे रखा है ना बेटा, तो आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, ये पूरा आप R1 ले लीजिए और ये पूरा आप R2 ले लीजिए, सो डिस्प्लेसमेंट मतलब R2 minus R1, so that will be equal to R, so that multiplied with your force कर लीजिए IJK में, that will give me the torque, ठीक है, चलिए टेक केयर बेटा, बाय।